കുറച്ച് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് സമാധാനമാകുമ്പോൾ ആള് വരട്ടെ. പറയൂ ബംഗാൾ. हेलो भैया। ബംഗാൾ. हाँ हेलो भैया, യാ या ഹലോ. कैन यू हियर मी? या യാ വി ക്യാൻ. अच्छा भैया, मेरे से हिंदी में बात कर सकते हो? सॉरी या यू कैन भैया टॉक. हिंदी में बात कर सकते हो? जी, आप हिंदी में बोलो, हम अंग्रेजी में रिप्लाई करेगा. भैया बंगाल में तो बीजेपी आए हैं। हम्म. भैया मेरे बंगाल की आइडेंटिटी और कल्चर सब ठीक रहेगा ना? थोड़ा एको आ रहा है वहाँ से. भैया वेट। या प्लीज चेक योर ईयरफोन्स, रिमूव द ब्लूटूथ. हेलो हाँ, भैया, सुन सकते हो आप? यस अभी. बोलो जी। पक्का पक्का पक्का. भैया मैं फिर से ज्वाइन करूँ? नहीं नहीं, बोलिए. सुन रहा है, आपके आवाज आ रहा है, बोलो बोलो। अरे यार जागे നമ്മൾ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്താ ചെയ്യാ, പോവല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം അവർ കേട്ട് പോയി. എന്താ ആകെ ആകെലിന് ഒരു അവസരം കൂടി കൊടുക്കാം, അത് കഴിയട്ടെ. യെസ് ബംഗാൾ बोलिए. भैया बंगाल में तो बीजेपी आए हैं, तो मेरे बंगाल का आइडेंटिटी और कल्चर सब ठीक ठाक रहेगा ना? जी जी। तो क्या हुआ? भैया बिहारी से तो भर जाएगा ना? बिहारी से भर जाएगा क्या बंगाल? बीजेपी आएगा तो वो कैसे बता सकते हैं आप? भैया तो फिर वो लोग उनके स्लोगन क्यों बंगाली में क्यों नहीं देते, क्यों हिंदी में देते हैं? तो फिर आप ममता जी के फैन है क्या? नहीं, मुझे वो भी पसंद नहीं है, लेकिन तो आप- बीजेपी भी पसंद नहीं है। तो नहीं, आपको कौन पसंद है? मिस्टर- सीपीएम? भैया कोई न्यू पार्टी भी तो हो सकता था ना? तो इसके बाद कौन है? सो सीपीएम हो गया, तृणमूल हो गया, बीजेपी हो गया, उसके बाद कौन है? मैं नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरे बंगाल का आइडेंटिटी ना खो जाए। अरे यार क्या बकवास कर रहे हैं। तो आपको कोई डर नहीं आया था? तो बांग्लादेश से लोग आ रहा है बंगाल के अंदर, और बंगाल कहाँ को से? इस्लाम देश बनने के लिए काम कर रहा है, तो ये सब उसके बारे भैया में कुछ आसाम और नहीं? त्रिपुरा में जो बीजेपी है वो उनके आइडेंटिटी और कल्चर को जैसे प्रमोट करते हैं, बंगाल की जो बीजेपी है क्या वो कर पाएगा? क्योंकि बंगाल की बॉर्डर तो बिहार से ही लगते हैं ना। क्यों नहीं कर पाएगा? बता दे दो, क्यों नहीं कर पाएगा? चलिए म्यूजिक क्या हुआ? जो कुछ स्टेट में, जिस स्टेट में बीजेपी आया है, उस स्टेट का आइडेंटिटी क्या खो गया क्या? गुजराती खो गया? नहीं नहीं, भैया गुजरात में गुजराती चलते हैं। नहीं, एक बात सुनो। गुजरात में कितने साल तक बीजेपी अब तक रूल किया है? वहाँ गुजराती खो गया क्या? गुजराती भाषा अब नहीं है क्या? भाई गुजरात तो मोदी जी का ही लैंड है ना, तो उनके कल्चर को प्यार करेगा ही। तो क्या गुजरात अभी भी है वहाँ। और ये दूसरा बात है कि केरला और कर्नाटक में बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगा तो यहाँ सब हिंदी बोल देगा, हिंदी को इम्पोज करेगा। क्या किया उसने? कर्नाटक में बीजेपी रूल किया है, बीजेपी के साथ आंध्रा में रूल कर रहा है बीजेपी की। भैया मेरे मेन प्रॉब्लम है कि बीजेपी के प्रमोट से आरएसएस और जो एक आर्य समाजी है ना, वो ना बंगाल में आ जाए, मुझे इससे ही सबसे बड़ा डर है। आरएसएस बहुत शक्ति है बंगाल में, अब तक भी शक्ति है, उसकी शक्ति के हिसाब से। लेकिन भैया ममता बनर्जी जितने भी खराब होना क्यों, उनके वजह से आरएसएस ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया कि हिंदी बोलना चालू कर दे या कुछ
ऐसा जो बंगाली कल्चर को हिट करे ऐसा। अरे यार आप एक चीज समझो, ये जो माहौल बनाया हुआ है बंगाल में, तो बंगाल में ऐसे माहौल बनाया हुआ है ममता दीदी ने ऐसे माहौल बनाया है कि जो बीजेपी वाला है वो एंटी बंगाली है, एंटी बंगाल है, ये सब माहौल है। ये जो नफरत के माहौल बनाया हुआ है वो जब गलत है। आप गुजरात में देखो, यूपी में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, क्या वहाँ का कल्चर उसने डूबा क्या, खो गया क्या वहाँ का कल्चर बीजेपी आने के बाद? नहीं भैया, खोया नहीं, लेकिन बीजेपी के हाथ पकड़ के ही तो आर्य समाज उन स्टेटों में भी स्प्रेड कर रहा है ना। क्या स्प्रेड कर रहा है, क्या माहौल बनाया वो? नफरत का भैया माहौल आर्य बनाया समाज, हुआ है। भैया मेरे शहर हिंदू धर्म में तो बनाया कभी, भैया मेरे शहर हिंदू बनाया धर्म में तो कभी वायोलेंट नहीं सिखाया, लेकिन आर्य समाज जो करते हैं वो क्या सही है? अरे यार ये जिस पार्टी का लोगों को मार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, वो सब गलत है। जिस पार्टी करो, कांग्रेस करो, तृणमूल करो, सीपीएम करो, बीजेपी करो, सब करप्शन करेगा तो सब जिस पार्टी कर रहा है, जिस पार्टी गलत कर रहा है वो गलत ही है, उसमें कुछ बीजेपी का बात नहीं है। जैसे भैया आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारे यहाँ रामनवमी पालन होते हैं कि बहुत शांति से, मतलब कि राम बंगाली स्टाइल में ही उनकी पूजा होती है, लेकिन बीजेपी जो करते हैं कि अस्त्र लेके, ऐसे कौन पूजा करते हैं रामनवमी के दिन? पूजा करेगा तो क्या प्रॉब्लम है? अस्त्र किसी को भी मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है क्या? लेकिन भैया वो लोग तो देखने ही बिहारी और गुंडा जैसे दिखते हैं, कौन क्यों अटेंड करेगा ऐसे? गुंडे जैसे दिख रहा है तो मार कर रहा है क्या? बंगाली लोगों को बीजेपी लोग मारता है क्या? जैसे मुसलमान लोग कर रहा है, जैसे कर रहा है क्या? भैया तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? अगर बीजेपी, बंगाल के बीजेपी भी उन जैसे हो जाए तो डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस क्या रहेगा तो क्या है कि बीजेपी वैसे नहीं करेगा, वो ही डिफरेंस है। अब एक बात समझो, अब बीजेपी आया है, मान ले मैं आपको एक बात पूछ लूं, कि इसके जवाब दे दो कि पहले 15 साल में तृणमूल कांग्रेस का जो रूल हुआ है बंगाल में, वो अच्छा था बुरा था? बात करो। भैया बुरा था। तो उसके पहले जो 40 साल तक जो बंगाल में सीपीएम का रूल हुआ है, वो बुरा था वो अच्छा था? वो तो ममता से भी बुरा था। नहीं, बंगाल जो लोग बोल रहा है, मेरे सब दोस्त हैं, यूरोप में भी दोस्त है, इंडिया में भी दोस्त है, जो बंगाल से आ रहा है, वो लोग बोल रहा है कि सीपीएम जो रूल किया है बंगाल में, वो ममता से भी बहुत बेहतर था, क्योंकि ममता जो कर रहा था वो डेमोग्राफिक्स में चेंज कर रहा था। वो मैं तो सीपीएम को नहीं देखा, इसलिए नहीं पता होगा। आप पढ़ो, जो स्टैटिस्टिक्स आ रहा है उसके बारे में पढ़ो, वो सब पढ़कर आप बात करो। इसमें जो भैया मुझे बीजेपी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही प्रॉब्लम है कि वो जो यूपी और बिहार के कल्चर इधर ला रही है वो तो सही ही नहीं है ना। वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो करे, लेकिन बंगाली हिंदुत्व की बात करे, वो क्यों यूपी और बिहार के हिंदुत्व ले आते हैं? एक सेकंड, आप क्यों बिहार के बारे में ऐसे बोल रहे हो? That is a state in India. You are part of the same country, right? So you should not talk about another state just like they are some different country. Especially if you go to Patna. Imagine if you go to Patna as a person and they say, "साले बंगाली तू वापस अपना स्टेट में, राज्य में वापस जाए," आपको कैसे लगेगा? तो आप ऐसे बात पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक दूसरा स्टेट के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी हमारे देश के लोग हैं। आप समझ रहे हैं? आपको समझ आता है ना क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ भैया आपने तो सही बोला, तो लेकिन आप कोई दूसरे अगर देखिए एक सेकंड देखिए, अगर एक बंगाली के बारे में और कन्नडिगा के बारे में आप एक दूसरे स्टेट का लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो आप कभी आपको सोच सकता है क्या कि उसका मन में क्या होगा? क्योंकि इफ यू आर सेइंग सच रेशियल स्टफ अबाउट अनदर स्टेट, what do you think they will think about you? Actually, this probably going to be exactly the same way a Bihari will think about a Bengali. So we should not say सारे क्राइम क्यों उनके स्टेट में होते हैं? देखिए
हर स्टेट में वो स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है. तो देयर आर प्रॉब्लम्स इन तमिलनाडु, देयर आर प्रॉब्लम्स इन केरला, but that doesn't mean that you can just say racial stuff about that group of people. Biharis are not very different from Bengalis. If you ask me as a southerner, like a person from southern state, for us like everybody is a Bihari, or like we will say everybody is a Bengali, because for us you speak a different language, but that doesn't mean you're all bad people. Because I have worked with, I have friends from all the states in India. So there are good people everywhere. Of course, the states are not having the same level of law and order, or same level of system across. So there is corruption in some states, and there is a lot of law and order issues in some states, communal issues in some states, which are not always very relatable in southern states, where we come from, especially in Kerala. But there are different problems in Kerala which are not in northern states. So that doesn't mean we can just say stuff about northerners and put them in a bad light, just like you did with Bihar. Imagine, as I said, if you go to Patna and they say you should not be here because you are a Bengali, what will you think? You will feel offended, right? So try not to say things like this. Thus, even if they are from a different country, you should pay a little bit of respect, because they are humans, right? And this is from the same country. This is just your fellow citizens. So you have to be a little bit more respectful. That's what I'm saying. I'm not saying that you should not express your opinion, but you're being very racial now. So, and also, the culture across India is all mixed. It's not just like that. Bengal has a distinct culture, Bihar has a distinct culture. It's not like that. There are a lot of things common among you. Actually, when I compare a South Indian state to a North Indian state, you are very different from our culture. But that doesn't mean there's nothing common with us too. So you have to sometimes celebrate the good things. Of course, every state has its own distinct problems, but that does not mean you can be racist towards the other state. So there are problems in Odisha, there are problems in Bengal. Imagine if a person call you a Bangladeshi when you go to Patna or when you go to Lucknow. They call you Bangladeshi. What will you feel like? Will you not feel bad? हाँ भैया. हाँ. So try not to, at least the least you can do is not name the state. You can just tell what BJP is doing wrong and leave with it. Because if you actually name a state, you're basically stereotyping that group of people. That's it. All people from Bihar are not bad. If you have worked in a city, even in Kolkata, there are people from Bihar who actually work in a lot of sectors. I think you know that, right? Because have you been to Kolkata? No भैया. I'm from Darjeeling. You have never even visited the capital city of Bengal. No भैया. अभी तक नहीं गए? नहीं भैया. Okay, then you are talking about Bengal as if you know the culture. You have to go to Kolkata and actually actually be friends with a Bihari. So in your wildest imagination, how would Kolkata look like? Tell me. भैया कोलकाता तो बंगाली कल्चर से एकदम फुल है. बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है. कोलकाता बहुत सुंदर है. You know, actually, I never go out. I'll show you an image of what you but I have been to the capital city of Kerala once. You have never been to Kolkata once, and you are talking about Bengali culture. उसके How can you? Yeah. उसके लिए एक कारण है. वो जो भाई Look at the picture. This is from Kolkata. उसको मलयालम नहीं आ रहा है भाई. भैया ये तो सब बांग्लादेशियों ने कर दी. This is it. अरे This is Bangladesh. नहीं भैया, ममता ने किया है, लेकिन मेरी कोलकाता बहुत सुंदर है. This is the Kolkata that you're speaking of? भैया मुझे इतना कुछ नहीं पता. मुझे बस इतना ही चाहिए कि Is this looking खूबसूरत to you? See, that is what we say about your state in Kerala. Not us. I mean, people in politics. So भैया मुझे बस इतनी प्रॉब्लम है कि बीजेपी बंगाल को त्रिपुरा जैसे बनाए, लेकिन बिहार जैसा नहीं. बस इतना ही चाहिए मुझे. Okay, I'll write down the chat. Okay.
Your See, point is taken. very for 2 minutes. See, one thing. Who is the elected representative of Kerala? Who is Adhikari? Is he a Bihari? Is he a person from UP? At least you should acknowledge that bhaiya. he's from Bengal. He was in the Trinamool Congress. You know that, right? The CM who is Yes, in Bengal bhaiya. right now is from Bengal. So even if they are from BJP, they cannot go beyond their audience, which is Bengali. They cannot tomorrow go and to the Bengali audience and say you're all frauds or you're all Bangladeshi. That will not happen. Every political party appeases a common base inside the state, and they will try their best not to offend the state. So you said about Hindi. You can go to Karnataka and you can go to Maharashtra. No BJP leader will try to offend Kannada or Marathi. So whatever you said about Bengali is also not practically right. They will not try to impose Hindi over Bengali if that is very sensitive in Bengal. So that happens across states. Even the BJP in Kerala will try its best not to offend all Malayalis. It's something practical in politics. So I don't know how old are you, but you may have got your information from the wrong sources. Yeah. At least go and visit your capital city for at least once. एक बात बोलूं भाई, Okay. तो हाँ भैया बोलो। भाई तो आपने बोला है आप दार्जिलिंग से है, तो दार्जिलिंग बहुत अलग है कोलकाता से, ठीक है। और मुझे मालूम है कि दार्जिलिंग बहुत दूर है कोलकाता से, मुझे मालूम है कि दार्जिलिंग बहुत अलग भी है कोलकाता से। फिर भी आपको बंगाली आता है ना, फिर भी आप हाँ बंगला भैया। बोल रहे हैं ना, हाँ भैया। तो दार्जिलिंग बहुत अलग है कोलकाता से। तो कोलकाता से जो इतने साल रूल किया है, तो अब आपका जो संस्कार है वो गायब हो गया क्या दार्जिलिंग का? दार्जिलिंग के खुद एक संस्कार है, यूनिक संस्कार है, वो गायब हो गया क्या? भैया हम लोग भी तो बंगाली ही हैं। बंगाली है मुझे मालूम है, लेकिन दार्जिलिंग का उसका भी खुद एक कल्चर है ना, जो केरला में आता है, जो केरला में हो गया है। तो मलप्पुरम एक कल्चर है वहाँ, जो ट्रिवांड्रम कैपिटल सिटी में कोई थोड़ा अलग कल्चर है वहाँ। डायलेक्ट से बंगाली में भी वैसे है, तो आपका जो डायलेक्ट है भाषा का, हिंदी का, वो डायलेक्ट है ना, वो अलग है कोलकाता से। क्योंकि मेरे को बहुत सारा दोस्त है बंगाल से, कोलकाता से, दुर्गापुर से, उसका डायलेक्ट बहुत अलग है। इसका क्या है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब आपका जो कल्चर है वो सब मतलब उसको खराब कर देंगे। वैसे आप कैसे सोच सकता है? ये सोच आपके अंदर दीदी ने डाला है। जो शहर फैला हुआ है, जो बात कर रहा है कि बंगला सबसे बेहतर है, बिहारी का बेहतर है, बिहारी बहुत खराब है, वो जो सोच है ना, वो जो सुपीरियोरिटी का सोच, उसको हटा देना चाहिए। हम सब इंडियन है, पहला अंध में भी इंडियन है, भारतीय है, वो अंदर रखना है। जो शहर फैला हुआ है इसके खिलाफ, बिहारी के खिलाफ, जो दीदी का या तृणमूल कांग्रेस का ये जो रूल है 15 साल का रूल, उसके हिसाब से आप बोल रहे हैं आपके अंदर वो शहर फैलाया हुआ है उसने, जो नफरत। बिहारी भी इंडियन है, मेरे को बिहारी फ्रेंड्स है, बिहारी दोस्तों है, बंगाली दोस्तों है, मेरे को सब एक ही है। मेरे को क्या है उसका अलग? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम उसके दूसरे के भी सुपीरियर है, दूसरे के भी बड़ा है। हम ये जो सोच है ना, वो खराब है हमारा। हम किसी के भी सुपीरियर नहीं है। जो मैं केरला से पैदा हुआ है, वो किसी केरला का मेरा आइडेंटिटी है ना, वो मेरे को एक सुपीरियर जीन नहीं मिल रहा है उससे हिसाब से। हम सब इंडियन है, वैसे तरह सोचो। तो फिर आप जो एक बात सोच है, दूसरा बात जो हो रहा है संस्कार का या भाषा का, ये सब पैरानोया है। अंग्रेजी में बोलेंगे पैरानोया, डर फैलाया हुआ है। बीजेपी जो स्टेट में रूल किया है, जो बीजेपी जो राजनीति किया है, जिस स्टेट में जो रूल किया है, जो आप उसके बारे में आप पढ़ो। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में बीजेपी रूल कर रहा है शिवसेना के साथ। उसने कुछ किया मराठी को? गुजरात को कुछ किया?
तो बीजेपी जो जो बहुत स्थान पर रूल कर रहा है वो, उसमें वहां तक कुछ भी नहीं किया भैया। है। आपको डर या आकर ये जो बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ डाटा भी नहीं है भाई। आप कुछ भैया पढ़कर मुझे सोचो। भैया मराठा या की बोले एक मिनट तो जो तीसरा बात है, जो बिहार नाम बोलकर ये जो नफरत फैलाया हुआ है, ये बंगाल के यूनिकनेस नहीं है। जो बंगाली बिहारी का ऊपर नहीं है, जो केरली मलयाली जो मल्लू लोग हैं ना, वो बिहारी के ऊपर नहीं है। यहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि वो बिहारी वाले क्या है, क्या भाई लोग, वो जो सोच है ना वो खराब है। हम किसी का सुपीरियर नहीं है, हम जो इंडियन है, पहले भी इंडियन है, अंत में भी इंडियन है। हम कैरेक्टर से बात करना है, कैरेक्टर से जो आदमी अंदर है ना वो देखना है, भाषा नहीं देखना है, जो स्किन कलर, स्किन का रंग है ना वो नहीं देखना है, जो लोग का कैरेक्टर है ना, जो लोग आदमी अंदर कैसा है वो देखना है। जो बोलता है अंग्रेजी में पर्सनालिटी देखना है। जो तीसरा बात है, आप कुछ पढ़ना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। जब मैं आपको बाय जैसे बोल रहा है, हम बात करना है, दूसरों का बात करना है, बढ़िया बात काम करना किया है। सलमान भाई, मुर्तदों का बाप। जो ओके भैया, बंगाल भाई, थैंक यू बंगाल भाई। बंगाल भाई, ओके भैया नमस्कार। बंगाल भाई थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग, धन्यवाद जी, आपका ख्याल भैया, रखना। नमस्कार। या नमस्कार। എന്തല്ലേ ഇവൻ ഇപ്പോഴാണ് ആ ഡയലോഗ് കറക്റ്റ് ആയത്. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ മുതലാളി. ഓഹോ, സൽമാൻ ഇത്ര ഹിന്ദി അറിയായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. പറഞ്ഞില്ല. വളരെ നന്നായി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം. സൽമാൻ അവിടെ പോയിട്ട് യൂറോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഹിന്ദി പഠിച്ചു. അതെ, എന്നാലും കൊള്ളാം, ഇത് നന്നായി. സൽമാൻ ഇടപെട്ട് നന്നായി. പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര റേസിസ്റ്റ് സാധനം കേട്ടോ. അത് ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം, പക്ഷെ അയാളുടെ മനസ്സിലത് ശരിക്കും, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച സർക്കാസം ആണെന്നാണ്. ഇയാളുടെ ടോണൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊന്ന് പഞ്ചാബിയാണെന്ന് തോന്നി ആദ്യം, പഞ്ചാബിയുടെ ഒരു ടോണൊക്കെ. പിന്നെ മനസ്സിലായി ഇയാൾ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം. അയാൾ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ശരിക്കും പോലീസ് കേസ് എടുക്കാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തമാശക്ക് പോലും വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ, പക്ഷെ അതുപോലും കേസ് എടുക്കാനൊക്കെ വകുപ്പുള്ളതാണ് ഇയാൾക്ക്. പിന്നെ ഹിന്ദിക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ, അതെനിക്കറിയാം, അവർ തമ്മിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇയാൾ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് ഏതെങ്കിലും വല്ല ബംഗാളി പോയിട്ട്, ഇതാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡോഗ് വിസിലിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇയാൾ പറയുന്ന കേട്ടതൊന്നും ബംഗാളിന് എന്തോ വലിയ കൾച്ചർ ഉണ്ടെന്ന്. ഇന്ത്യ വിഭജിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ബംഗാൾ. അപ്പോ അങ്ങനെ കൾച്ചർ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ കൾച്ചർ. ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഇയാൾ പറയുന്ന അത്ര വലിയ കൾച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദാരിദ്ര്യത്തിലും പട്ടിണിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും കഴിയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ബംഗാൾ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ പണിക്ക് വരികയാണ് ആൾക്കാർ. ഇത് ശരിക്കും മുമ്പ് പുള്ളി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അല്ല ഇതില് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഈ ആരിഫ് ജാലൻ അങ്ങോട്ട് സജഷൻ പോയെന്നാണ് ഡാർജിലിംഗിലേക്ക്. അല്ല ഇതില് ഇവൻ കുറെ കാലമായി ഇവന് നിരൂപ് എന്ന അവന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരല്. ഇവൻ കുറെ കാലം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആരിഫിന്റെ കുറെ ചാനലൊക്കെ കാണലുണ്ട്, ഞാൻ കാണലുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ ലൈവ് ചാറ്റില്. അപ്പൊ ഇവന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണത് പിന്നെ ദാർജിലിംഗിലാണെന്ന്. അവൻ നേരത്തെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ കൊണ്ട് ബംഗാളിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദാർജിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ബംഗാളിൽ നിന്നിട്ട് ബംഗാളിലെ മെയിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പിലോണ്ടാണ് വഴിയുള്ളത് ദാർജിലിംഗിലോട്ട്. അപ്പൊ ദാർജിലിംഗ് ഭയങ്കര ഐസൊലേറ്റഡാ. ബംഗാളിന്റെ മെയിൻലാൻഡിൽ നിന്നിട്ട്, ബംഗാളിലെ മെയിൻലാൻഡ് കൾച്ചറിൽ നിന്നിട്ട് ദാർജിലിംഗ് ഐസൊലേറ്റഡാ. ഒരു നാരോ പാത്ത് വേ ആണ് ദാർജിലിംഗിലോട്ട്. ദാർജിലിംഗ് നമ്മുടെ ഊട്ടിയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഊട്ടി അത്ര ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ല, ദാർജിലിംഗ് ഭയങ്കര ഐസൊലേറ്റഡാ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നാരോ സ്ട്രിപ്പാണ് ബംഗാളും ദാർജിലിംഗ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാർജിലിംഗത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബംഗാളികളൊക്കെ അത്ര കട്ടില്ല. ആ ഒരു മംഗളോയിഡ് ഒരു ലുക്ക് അത്ര അധികം അല്ല ബംഗാളികൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പൊ മമതനൊക്കെ നോക്കും, നമ്മൾ ഈ സുഖനാധികാരിനൊക്കെ നോക്കും, ദാർജിലിംഗുകാർക്ക് ശരിക്കും ഒരു മംഗളോയിഡ് ലുക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ലുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് മെയിൻലാൻഡ് ബംഗാളിൽ നിന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലാൻഡ് ഈ ഒരു
കൊൽക്കത്ത ഭാഗത്തുള്ള മെയിൻലാൻഡ് ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവരാണ് വന്നിട്ട് പറയണത് BJP ഞങ്ങൾ ബീഹാരികളെക്കാളും വലുതാണ്, ഞങ്ങള് പിന്നെ ഇവിടെ BJP വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീഹാരികളെ ഭരണകൂടം ഇവിടെ വരില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹേറ്റ്രഡ് അവിടെ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് ദീദി അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ഡാർജിലിംഗ് നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോമഡിയായി തോന്നുന്നത്. കാരണം അവർ തന്നെ മെയിനിൽ നിന്നിട്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബംഗാളാണ് വലുത്, ബംഗാളി സംസ്കാരമാണ് വലുത്, ഞങ്ങൾ ബംഗ്ലയാണ്, ഞങ്ങൾ ബിഹാരികളല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്ത് ലോജിക്കാണെന്ന്. എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്, എന്നിട്ടാണ് ബിഹാരികൾ എന്തോ വലിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണെന്നുള്ള ആ ഒരു. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ബിഹാരികൾ ഇത്രയും ദൂരത്തു നിന്ന് വരുന്ന സംസ്കാരത്തിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് വരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അടുത്തടുത്ത്. കാരണം ഹിന്ദി എന്നുള്ള ഭാഷ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഹിന്ദി എന്നുള്ള ഭാഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഭാഷ, ആ ഒരു ബാരിയർ തന്നെ വിടാൻ വലിയൊരു കാരണമാണ് ഹിന്ദി ഭാഷ എല്ലാവരും കഴിയാത്തോളം കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ പഠിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചാറ്റിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗുർഖാലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ ഒരു ദാർജിലിംഗിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം, ദാർജിലിംഗിൽ ആ ഒരു മെയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടതായതുകൊണ്ടും ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഗുർഖാലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഗുർഖ ലാൻഡ് പാർട്ടി, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അവിടെ. അതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദാർജിലിംഗ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ടാണ്, അപ്പൊ ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, പിന്നെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് BJP ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നതാണ്, ഈ മമതാ ബാനർജി ബംഗ്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെറുപ്പ് ഇവിടെ പരത്തുകയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് പുള്ളിക്കാരന് വേണ്ടത് ശരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രായം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടെന്ന്. ഞാനൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആരിഫ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? So if Bengal or Nirub is listening, you must know that the difference between Bihar and Bengal is not that much. I'll show you. So if you see, this is the HDI index in Wikipedia based on some metrics again. I'm not very trustful about these metrics, but I'll show you where Bengal stands. So there is this saying in India that there are some Bimaru states. So it includes usually Rajasthan, Jharkhand and Bihar usually. So people think that Bengal is so better than Bihar and these other Bimaru states, but it's not. So if you see the HDI index, which basically, I mean, its intention is that overall the state metrics about the women's rights and everything else is, I mean, that's what's measured in the HDI index, but I don't know what's the metric they're using to calculate this one, but this is from Wikipedia. I'll show you where Bengal stands and where Bihar stands. Bihar is obviously a backward state in terms of what has been happening for a lot of years, and there are some talks that Bihar should again be divided into few more states so that governance can get better. But Bihar definitely has a lot of problems, but Bengal is nowhere better because of the rules, especially because of the communist rule for a long time, like around 30 years, plus Trinamool's rule. Things have not got better. That's what you must understand. So Bihar is at position 36. If you see, I mean, this includes union territories, so there are more than 28, 29 states, places in the list. Bihar is at 36, yes, but check where Bengal is. Bengal is at position 27. Bengal is not better than Bihar by that big of a margin. If you see 0.719 and 0.650. So if you see, if you're going to blame a state and make racist remarks, then I as a Keralite, because of my HDI index, which I am not very proud of, but I should have the right to say that a Bengali is useless. But I cannot say that, but still, based on this index, Bengal is worse. It cannot even be compared to a Keralite, or a Bengali cannot be compared to a Malayali. But I know that Bengalis are as capable as anybody because my boss is a Bengali. Because I work with people from all states in India because I live in a metro city. So it's not that people are bad. Actually, there are a lot of good people from there, but it doesn't mean that the state or like the state indices can get better just because a minority is better. Like, of course, the educated elite or the people who have access to money
they have a chance to get better, but it's not the situation when you take the average across other states in India, especially Bihar, Jharkhand, or Rajasthan, or any other states, even UP. But UP is also getting better. You must understand that you said a lot of things about UP. UP has been getting better in terms of infrastructure, etc. after BJP's second term under Yogi, not because of Yogi's religious politics, because investments are coming towards UP, even including sectors like agriculture are getting better. So you must understand that just because BJP ruled a state or a party ruled a state, no state has got better in India. Every government across India, like whatever states they are ruling in, even the central governments, even during the periods of BJP and Congress, India has been getting incrementally better. So it's just a myth or like a superstition about Indian politics that maybe some youngsters have, that some states, because this party ruled, of course, some parties can make very stupid political decisions, just like Communist Party in Bengal and Kerala. Sometimes have made, even they had to correct their paths actually. So just because a party rules a state does not mean that that state will get worse or better. For example, if Kerala's indices have been better, despite the fact that our political parties had very retrogressive or very regressive politics, especially the Communist Party in Kerala. They were not always open to investments or change, but still in the last reign under Pinarayi Vijayan, they had a positive outlook towards investment, but still they lost. Still they lost the election. So the politics does not determine how India goes ahead with development, etc. Of course, if a party is very progressive and open to very good economic decisions, it's a good thing. Especially the last two BJP terms have been better for India because it was open to investments. So of course, in the previous time during UPA, because of some political parties, especially the communist parties, there have been some obstacles to certain deals with US, etc., some other countries. So it has been a bit difficult for the UPA government to implement certain schemes and certain policies because of their dependence on the communist political parties, especially CPM. So in the second term, because in the first term they did have majority Congress, but second term they had to rely on a lot of political parties. That's why they lost the election. So it's not always straightforward. Okay, I was just talking about these indices. So if you are saying that a Bihari is worse than a Bengali and Bihari is worse than Kerala. So I can just say you're all useless. Okay. That's cool. Thank you.